guys, welcome to Divine Messenger 1111. So आज मैं सोची, आज मुझे अचानक से ऐसे एक डिवाइन गाइडेंस मिला कि कुछ मैसेज है जो मुझे आप लोग के साथ शेयर करनी चाहिए। बिकॉज़ कल जो है वो न्यू मून है और न्यू मून के दौरान एक अलग सा इमोशनल पर्जिंग होती है। मुझे अलग सा एक डिवाइन से पुश मिल रहा है था अभी तक कि नहीं, मुझे आज आप लोग को कुछ मैसेज सेंड करना है एंड देयर मस्ट बी सम एडवाइस, सम गाइडेंस दैट माय व्यूअर्स नीड्स टू हियर। मुझे ऐसा एक गाइडेंस मिल रहा था अभी, ठीक है। सो आई वॉज वर्किंग ऑन समथिंग, आई वॉज इन डिफरेंट काइंड ऑफ थॉट। अचानक से मुझे एक डिवाइन गाइडेंस बोल सकते हैं, एक पुश बोल सकते हैं कि नहीं, गो हेड, व्यूअर्स नीड्स टू हियर दिस, दे नीड टू हियर समथिंग फ्रॉम माई एंड, ठीक है। तो डिवाइन थ्रू मी मुझे आज आपसे कुछ डिवाइन गाइडेंस देना है जो मुझे डिवाइन बताना चाह रहे थे। सो टुडे आई एम हियर विद दिस वीडियो, प्रॉपर गाइडेंस फॉर दिस न्यू मून। ये पर्टिकुलर जो एनर्जी है, ये न्यू मून की एनर्जी मुझे फील हो रही है और ये रीडिंग कम्प्लीटली कल न्यू मून एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, ठीक है। सो लेट्स डाइव इन कि देखते हैं डिवाइन मेरे ओर से आपको क्या डिवाइन गाइडेंस देना चाह रहे हैं, ठीक है। सो लेट अस चेक। मैं ऑलरेडी कार्ड को एनर्जाइज कर चुकी हूँ, सो आई विल गो हेड विद इट। आई विल शफल इन फ्रंट ऑफ माई व्यूअर्स आप प्लीज़ कार्ड्स पे फोकस कीजिए एंड बी पॉजिटिव। आप पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव मैनिफेस्ट होगा। यू नो, आवर लाइफ चैलेंजेस हम लोग रोक नहीं सकते, बट समथिंग जो हमारे कंट्रोल में है वो है द एटीट्यूड टुवर्ड्स द चैलेंजेस, द एटीट्यूड टुवर्ड्स द ऑब्स्टिकल। अगर आप पॉजिटिव हो तो डिवाइन विल बी लाइक awe of your strength, awe of your positiveness. So he will tend to, like he or she is the divine, it's not a gender specific, but they will tend to give you whatever that you are like means मैनिफेस्टिंग, राइट। जैसे कि आप देखते हो कि कोई इंसान जो है बहुत मेहनत कर रहा है, बार बार फेल हो रहा है, फिर भी वो खड़े होकर उसी पे ट्राई किए जा रहा है। एक टाइम पे ऐसा है कि डिवाइन भी अपना मतलब ऑब्स्टिकल दे देते, थक गए थे कि नहीं अब तुम्हें ये चाहिए, तो आई नो दैट यू वांट इट, सो गो हेड विद इट, आई विल गिव यू व्हाट यू वांट। कुछ ऐसा एक एनर्जी मुझे फील हो रहा है, ठीक है। ये एनर्जी है कि ब्लॉकेजेस अल्टीमेटली जो है डिवाइन आपके पाथ से रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स चेक मोर कि एक्चुअली डिवाइन और क्या बताना चाह रहे हो आप। आफ्टर द शफलिंग आई हैव द एम्प्रेस। तो स्टार्टिंग तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, वीनस एनर्जी, प्रॉस्परस एनर्जी, ठीक है, ग्रोथ एनर्जी, ठीक है। डिवाइन क्या मैसेजेस है न्यू मून में, क्या एनर्जीज है, क्या गाइडेंस आप देना चाहते हैं फॉर दिस न्यू मून। लेट्स डाइव इन। व्हाट आर द एनर्जीज, व्हाट आर द डिवाइन गाइडेंस दैट माय व्यूअर्स नीड्स टू हियर राइट नाउ। मेरे व्यूअर्स अभी क्या डिवाइन गाइडेंस, ओके, ठीक है। बहुत सारे कार्ड आ गए हैं। पहला कार्ड जो मुझे आया है वो है पेज ऑफ कप्स, उसके बाद आया है एक साथ 3 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स। पता नहीं ये कप्स की एनर्जी है, तो डेफिनेटली न्यू मून जो है वो इमोशनल पर्जिंग होगा। एंड ऑल्सो आई सी अमॉन्ग फ्रेंड्स देयर इज सम सेलिब्रेशन, और अमॉन्ग फ्रेंड्स जो आपका क्रश थे, ठीक है, दे विल लाइक 2 ऑफ कप्स। सो जो फ्रेंड्स में जो आपके क्रश थे वो आफ्टर ऑल आपको अप्रोच करते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। नाउ दैट समवन इज क्राइंग, तो अकेले में कोई रो रहा है। वी हैव हर्मिट एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये हार्ट ब्रेक जो भी हुआ, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, जो बिट्रे हुआ, वॉट एवर हैपन बिटवीन यू बोथ, हाँ, कोई यहाँ पर इमोशनल पर्जिंग बहुत हाई है। मतलब somebody is crying like a hell alone and they are isolated and missing you like hell। या तो आप कर रहे हो या तो आपका पार्टनर कर रहा है, या कोई यहाँ पर हार्ट ब्रेक की एनर्जी है। समबडी इज़ इन इमोशनल पर्जिंग हो रही बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि पार्टनर में क्यों बोली, बिकॉज आई हैव 2 ऑफ कप्स, तो कोई पार्टनरशिप रिलेटेड मैसेज है ये विथ 3 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स। कोई जो फ्लर्टी एनर्जी में थे, जो आपको मतलब कन्फेस नहीं कर रहे थे, समथिंग लाइक दैट एनर्जी।
जो ये अकेलापन, ये डिस्टेंस, हार्ट ब्रेक हो रहा था, ये इमोशनल पर्जिंग, दे सी यू एज द क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है। आप में एक ब्यूटीनेस है, आप सेंसिटिव हो टुवर्ड्स एनर्जीज, आप में एक मतलब एक डिवाइन फेमिनाइन, इमोशनल डिवाइन फेमिनाइन है, या इमोशंस काफ़ी अप एंड डाउन होने वाले हैं कल। आई फील समबडी विल बी क्राइंग अ लॉट, एक इमोशनल पर्जिंग होगी, समबडी विल बी मिसिंग अ लॉट। मतलब अगर मैं देखूँ कोई मतलब साधु बन के ना, हर्मिट, वर्गो एनर्जीज लाइक यू नो दे विल बी क्राइंग, एंड वर्गो एनर्जी है, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, हाँ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस यहाँ बहुत ज़्यादा हैवी है, एंड वर्गो एनर्जी भी है यहाँ पर। आपके लग्न वर्गो हो सकते हैं, आपका राशि वर्गो हो सकता है, बट यहाँ पर काफ़ी आइसोलेटेड एंड कोल्ड जो फील हो रहा है, जो डिस्टेंस हो रहा है, देट्स लाइक किलिंग देयर हार्ट, ठीक है। अभी समबडी इज़ लाइक एक्शन लेने के मोड में है, बिकॉज व्हाट आई एम फीलिंग विथ 3 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स की कोई बंदा है अमॉन्ग योर फ्रेंड्स या अननोन और योर वर्क प्लेस जो आपको फाइनली मतलब एक्सप्रेस करने वाले हैं, एंड दे हैव अ क्रश ऑन यू एंड दे कांट एक्सप्रेस विच इज़ ब्रेकिंग देयर हार्ट, एंड फाइनली यू आर कमिंग हियर विथ 2 ऑफ कप्स। ये पेज ऑफ कप्स से मेच्योर्ड एनर्जी में आने वाला है, एंड इक्वल लव, इक्वल बैलेंस्ड इमोशन, बैलेंस्ड रिलेशनशिप, एक बैलेंस्ड फॉर्म में आने वाला है, ठीक है। एंड इमोशंस बैलेंस्ड होंगे आफ्टर दिस पर्जिंग, है ना, एक इमोशनल बैलेंस मुझे दिख रहा है, ठीक है। एनीथिंग एल्स गाइडेंस हियर इन दिस न्यू मून? समबडी अकेले रहते रहते थक गए हैं, इट्स रियली हर्टिंग देयर हार्ट। ये चीज़ मुझे बहुत बहुत हाई फील हो रही है। 3 एनर्जीज बहुत, मतलब मैं क्या बताऊँ आपको, 3 एंड 9 एनर्जीज है यहाँ पर। 2 एनर्जीज भी है, बट 3 प्रोमिनेंट है, ठीक है। विद इन 3 days शायद there will be some kind of communication coming from your partner, ठीक है, and it will be bit emotional and there will be an equal relationship। जो पहले one sided था ना, कुछ equality मुझे यहाँ दिख रही है, आपके पास आते हुए दिख रहे हैं। Let me check more about this, what more in this new moon। जैसे कि मैं बोले एक न्यू बिगिनिंग की तरफ ये दिख रहा है, पास्ट ट्रॉमास, पास्ट जितने भी है, एक न्यू रिस्क, न्यू बिगिनिंग की तरफ, एक केयर फ्री बिगिनिंग मुझे यहाँ फील हो रही है। न्यू मून में आप एक नया स्टार्ट लेने वाले हो लाइफ, नॉट ओनली इमोशनल भी, आप जिससे होल्ड बैक कर रहे थे ना, आप उससे होल्ड बैक से निकलने वाले हो। मे बी आप कोई रिलेशनशिप में अटके थे, इट वॉज अ लॉन्ग टाइम एंड दिस आपके पार्टनर कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, एंड इट वाज रियली हर्टिंग यू इन अ हार्ट, बट व्हाई ही और शी इज़ नॉट टेकिंग एनी एक्शन। तो आप इस पार्टनरशिप से भी निकल रहे हो। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप अटके रहना नहीं चाहते हो, यू वॉन्ट टू गो फॉरवर्ड एंड हैव दिस केयर फ्री, अ फ्रेश स्टार्ट। ये न्यू मून जो है ना, काफ़ी इमोशनल पर्जिंग के साथ एक क्लेंजिंग का इमोशन मुझे दिख रहा है कि आप एक फ्रेश स्टार्ट ले रहे हो अपने लाइफ में, स्पेशली इमोशनल सेक्टर में एक फ्रेश स्टार्ट मुझे दिख रहा है, चाहे वो आपके पार्टनर के साथ हो या चाहे आप लाइफ में एक न्यू कनेक्शन, एक फ्रेश कनेक्शन मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो हाँ, एक फ्रेश बैलेंस्ड कनेक्शन जो है वो स्टार्ट होने वाला है विद इन 2 days आफ्टर द न्यू मून, और 2 to 3 days, ठीक है। बट देयर इज समवन इज कमिंग फॉरवर्ड, लेकिन मैं बता रही हूँ कोई आपको अपना इमोशन एक्सप्रेस करना चाह रहे केयर फ्री होकर, विदाउट एनी मीन्स, मुझे ऐसा फील हो रहा है, विदाउट एनी बैगेजेस, एनीथिंग एल्स इन दिस न्यू मून। फूल जो है वो बेसिकली क्लीन स्लेट है, तो देयर इज नो एनर्जी, मीन्स आई वुड नॉट से एनी काइंड ऑफ राशि हियर for the Fool, but हाँ, Cancer, Scorpio, Pisces, Virgo is still prominent. What more in this new moon my viewers needs to hear? What more in this new moon my viewers needs to hear? Kindly let me know. ये कार्ड आ रहा था, हाँ, एक अर्थ एनर्जी से टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मैं बता रही थी वर्गो एनर्जीज हैं, तो मे बी ही और शी कैन बी वर्गो, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एक बंदा है जो टॉल है, डार्क है, हैंडसम है, और एक बंदी है जो हल्की डार्क हो सकती है, बट हाँ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, उनका मूवमेंट आपको दिखेगा।
मे बी अभी तक जगलिंग कर रहे थे, एज आई सी, अभी तक एक कंफ्यूजन स्टेट में थे. नाउ ही इज़ लाइक लॉयल, डिपेंडेबल, एक फ्रेंड थे, जैसा 3 ऑफ कप्स और पेज ऑफ कप्स एक फ्लर्टी एनर्जी में थे. नाउ एक स्टेबल एनर्जी में आना चाह रहे हैं. इट्स अ स्लो एनर्जी, मतलब ये काफ़ी कॉशन है, मतलब टू एंड फ्रो सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा. ठीक है, टू एंड फ्रो सोच रहे हैं, मतलब दे वर लाइक मैं क्या बताऊँ कि हाँ इससे क्या होगा, इससे मेरा इफ़ेक्ट क्या होगा, आगे जाकर क्या हो सकता है. सारे प्रोज एंड कॉन्स को बैलेंस करते हुए ये अप्रोच कर रहे हैं, इसलिए ये स्लो है. बट हाँ ये आना चाह रहे हैं, दैट्स व्हाट आई एम फीलिंग. ठीक है, देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ गिविंग अस सम सॉर्ट ऑफ कमिटमेंट, बट अगेन एक होल्ड बैक एनर्जीज हैं. ठीक है, एक होल्ड बैक एनर्जीज हैं. सो लेट्स डाइव डीप. Guys, just a sec. Sorry guys for that, just a sec. So एक एनर्जीज मुझे यहाँ फील हो रही है कि yeah, somebody is like thinking of giving you some sort of stability. Okay, let's dive deep into this. In this new moon divine, what more that I want to give the guidance to the new moon. Seven of Swords. Somebody is hiding stuff from you. Somebody may be manipulative with you. Somebody is not clear cut. Somebody is hiding a lot of things. Somebody is manipulating you. Okay, you will come to know about somebody's manipulation here. Okay, still something is hidden from you. It's not clear. मतलब न्यू मून एनर्जीज में है, यू विल फील लाइक somebody has stolen something from you. मतलब there can be chances, so be aware of your things guys. Okay, there can be chances people stealing their things away, but also I feel that there is somebody is hiding a lot of truths. Maybe the fact is not clear till now. Okay, that can be cases, so beware of signing any kind of documents or something like that. There may be some kind of manipulation happening behind the scenes, right? So that is also the guidance that I am getting here. Okay, what more? Strength. Okay, the strength I'm getting here, that Leo energies, tame your, have courage, have faith, control your animalistic instinct here. Okay, means that what I'm getting here, you need to go with this courage and purity of mind and heart, and means have this courage to face overcome these challenges that you are going through, right? Everything will sort it out. You have an infinite amount of courage within you. So believe in yourself, have faith on angels, have faith on God, have faith on yourself. Everything else will get sorted out. So the hiding here, which I feel that somebody is hiding a lot of passion from you, right? And it's really hurting their heart. That also I'm channeling here. The fact that is somebody is taking a lot of courage of hiding some sort of facts from you. Okay, it's getting them with lot of courage. Clarify the Seven of Swords again with the strength. I need some kind of clarification. What type of sword is hiding? What type of manipulation is going on here? What type of truth is hidden from my viewers here in this new moon that they may come to know? Magician.
I see somebody is manipulating you at your workplace. Okay, some truth is not getting revealed at your workplace, or boss maybe is giving you some kind of illusion, which is not completely true. Is not completely true with the fact that they are showing to you, right? That also I'm feeling. It's like an illusion that they are giving, that whatever it is an illusion, it's not the truth. You need to act with strength and courage. That also I'm getting here. Or what kind of fact, or somebody here is manifesting you as well. They are inspired by you, and they are inspired by the strength and the courage that you have. That is also I'm getting. So it's like judgment, yes, and the lovers here. Yeah, so the choices that are being made, right, the choices that are being made by you is judged by others and judged by people. And people's somebody, your co-workers or your boss, they are really inspired by you on this new moon also I'm getting. And they are hiding this fact that they are taming their beast here. Somebody like how much courage that she had, hiding behind the scenes, and she's manifesting the desired job, or is hiding behind the scenes. Somebody is having an illusion or doing some kind of magic or manifestation work for you, right? Like, yeah, that also I'm getting. Somebody is hiding the fact that somebody is manifesting you as well, or somebody is hiding the fact they are so inspired by your courage, inspired seeing you as a magical, that you have all the tools, you have all the power to manifest your desire, right? And manifest your desire money. But also I feel that some money can get stolen from you. It's an illusion. It's an illusion. So beware of signing any kind of document at your workplace in this new moon. That also I'm getting. But the sun, whatever it is, everything will turns out to be positive. So don't worry, guys. Angels are with you. Act with growth is there. Act with courage, be playful, have faith on God. The truth will come to light. That also I'm seeing. The truth will come to light. There is an light at the end of the tunnel. So it will come to light. So nothing to worry about. Angels are with you. There is a joy. There is an whatever. If someone is hiding their feeling, that will also come to light. If somebody is hiding some kind of manipulation technique in your workplace, that will also come to light. So have courage, have faith, everything is working out in your favor. With the judgment card, somebody will realize your worth. They will realize that how powerful you are. They will realize that how they have judged you harshly before, and what kind of character person that you are. People will be judging you fairly. They will judge you like a magician, somebody like a magician, a magical person, right? Also with the sun, the most positive card of the day, Leo energy again. Yes, you have the fire, you have the passion to work through your goals. So go ahead with it. Alright, so that's all the guidance that I got. Oh my god, with the Ace of Wands as well, a new beginning, a new passionate beginning is there, a new beginning in a relationship, a new beginning in your workplace, a new job offer, a new beginning in your life, something one within a day. Means after the new moon there is some kind of new beginning, new passionate beginning is there, new opportunity will be there, a new passionate beginning in your relationship will be there, and it will be given to you by the divine. A divine intervention is there, because with the judgment card, yes, it's all the plan of the divine. Some past person may be coming back with a new beginning. That also I'm seeing. Some past person, some past energies are evolving out, right? They will evolving out, and they will like, I have judged you harshly. They will apologize to you.
like they will again have this offer of get together or something like that. That also I am seeing. Okay, so yes, these are the energies of this new moon. Take care. So let us check with the major arcana card. What are the major energies that you need to focus on this new moon? Alright, overall energies, I see that some past friends or some past of your crush is coming back with expressing their emotion. A truth will come to light, may it be workplace, may it be someone feelings. A truth will come to light here, okay? Alright. Be aware of signing any kind of documents, read it carefully. I feel there's everything is an illusion here. It's an illusion. So don't fall into a trap. This new moon will come with lot of emotional purging, guys. I am seeing lot of hurt and distance. Right? People will be judging you. They will be inspired by you. That's also a nice energy, right? People will be inspired by you, that how powerful, how courageous you are, right? How the like a Shakti energy, strength is also said Shakti. Like, what are the major energies in this new moon, my viewers? What are the major energies in this new moon for my viewers? What are the major energies in this new moon for my viewers? What are the major energies in this new moon for my viewers? What are the major energies in this new moon for my viewers? Lovers, wow, as I say, two of cups was coming there. So yeah, I feel a union is there in this new moon. An emotional purging will, someone will cry in front of you, with you, stating and expressing their feelings, and definitely a union is there. Wow. Radhe Krishna, Jai Ho Radhe Krishna. Love and unconditional love. Somebody will express their feelings to you. Their expression will come to light, or your manifestation will come to reality. That also I am channeling here. What are the new moon energies my viewers needs to hear? What are the new moon energies that my viewers needs to hear? Tower. There is some kind of ending, guys. As I told you, there is some kind of tower movement will happen. 6 and 16. Oh my god. 10 4. Major means disruptive energy. Okay, with the justice at the bottom. Karma will hit back. Somebody's karma will hit back. And this new moon, again I told you, some kind of purging will happen, some truth will come to light. With the lovers here, breakups can happen, okay, or after the lovers again the tower. So there is a weak foundation that will break, okay, coming to balance situation. Like a page of cups will break to two of cups, same way all the karmas will get balanced. There will be an equal give and take after this one. With the new moon, there will be a breakage of some kind of abusive relationship or toxicity, and a new beginning is there with the temperance, against the balance. A balance will be forming between a conscious and the subconscious mind. There will be a balance is coming. That also, that I'm channeling. After the new moon, some kind of emotional balance is coming through. Alright. Dive into it. Yeah, Hanged Man. Yes, so with an Empress card again, yeah. So somebody is sacrificing something, somebody was stuck into this situation which you are going to release after all with this Empress card, okay. Somebody was stuck in this third party situation, or this mother energy I feel, or there is some divine feminine as being a third party. There was a stuckness in some kind of third party here. That third party is going to release with the tower energy, and justice are being made. That is the new moon energy I am getting with this again, the judgment. Yes, a realization will happen to
to somebody that this was all meant to be. This was all meant to be because it is all the divine plan. It was all the divine decision and his plan that this all things happened. To give you this kind of union, somebody has to go through this Tower, Justice and the Hangman. Heavy energies for the people who are in contact or who are in about to get union or who are in distance, I feel. Somebody was stuck in this third party situation, and now the karma is going to balance. Something ending of this third party I'm seeing by Saturday. Some action is going to happen and union will be there. Or if due to some third party your love has got challenged or your love relationship got disruptive, that karma will also backfire to him on some way or the other, and they have to release that third party as well for whom your relationship got over. Okay, that is the thing I'm getting, and there will be a judgment, a judgment from God. A judgment will be there, an announcement will be happening, right? People will be, someone will be realizing that you are the only his true love which I lost, and you are the only one which I should go with it. That kind of judgment is there. Divine intervention is happening. All these things are divine plan, guys. So relax. Divine is working on your favor. Okay, have faith. Right? So yes, again I see 6, 16, 11, 20. 20 is also 1, 1. 12 and 3. 12 also counts to 3. 3, 6, 16, 11. Okay. So yes, 3, 3, 3, 1, 1, 1. This energy, 11 energy is coming. Tomorrow is 11 January, 111. So 111 energy is there. Right? 111 energy is there. So tomorrow can be an heavy energies, guys. I see that some will have some kind of emotional purging, and they will realize that you are their one, and they will come ahead with an apologization, or a union is coming through, expressing their emotion with 2 of cups and lovers. They will, after realize your true worth, they will realize that you are the only one for them. That kind of lesson I'm saying. Somebody was stuck due to some obstacle, and they will come out of it with the star. Be hopeful. Star is aligning for you. Whatever will happen, that will happen for your greater good. With the magician again, be hopeful. Okay, and you have all the power you need. Cleanse your aura. Okay, that also I'm seeing. Heal your aura. Your aura has lots of blockages. Your aura needs to get healed. Your chakras needs to get healed. Heal your chakras, your heart chakras, your crown and throat chakra, root chakra, that chakra I'm seeing, and crown chakra. Balance your chakras to make yourself grounded, to make yourself, grounded in this challenging situation that is happening currently. So don't worry, guys, be strong, have faith on angel. Whatever is happening, it's according to the divine plan, it's according to the divine energies. So don't worry, after all, be hopeful with the star. Everything will go in your favor. Star with the moon. In this new moon, I got the moon and the star. So this new moon will have, after the tower, there is a hope. So this new moon will bring out some kind of disruptive and emotional purging. So don't worry, this will happen for your greater good, for your greater growth in your life. May it be in finances, in career, in love life, whatever it be, it is happening for your good. So don't worry, guys, that's all for today. If you like this video, kindly subscribe, share, comment the channel, and let me know what other things that you need to know, you want me to make video of. I'll definitely make sure that I'll do it. Okay, thank you, guys. I love you guys. Be blessed, be happy, and stay positive. Thank you.